Hi, welcome to my channel Yash Infotech. This is Dinesh here once again, and today I am here to tell you about the new feature of WhatsApp which is going to be launched very soon, and it is an excellent feature actually for those who used to send audio recordings or audio notes on WhatsApp, because earlier what used to be happen, you have to hold the microphone and then record audio, and then when you release the thumb, then your audio is sent. But in this new future, what is going to be introduced is that you can just hold the microphone and then lift it up, and then you can release your thumb or any finger whichever you use to record the audio, and you can you'll be hands free, and now you can record audio as long as you want, and then when you are done you can click on send button to send the recording, or you can also cancel the recording if you don't want to send it to anyone. So this is the new feature which is going to be launched, and it is really an excellent feature, and I'm going to show you on mobile. Although this version is yet to be released, but as a beta tester, I have this new version, and I can show you by operating on the phone also. So I'm going to tell you show you the demo of this feature, and hope you like this video. If you like this video, then you can share with your friends, and subscribe to my channel. Okay, so I'm going to show you the demo. हाँ, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको फ़ोन पे भी ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो नया फीचर है काम करता है। ओके, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरह चलता है। ये मैंने चैट विंडो खोल के रखा है जिसमें ये माइक्रोफोन आपको दिख रहा है, जहाँ जब किसी को ऑडियो सेंड करना था तो इसे ये माइक्रोफोन होल्ड करके रखना पड़ता था पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है नए फीचर में। ये अपने माइक्रोफोन को दबाया और इसको ऊपर करके छोड़ दिया तो ये लॉक हो गया। ठीक है, मतलब अभी आप फिंगर अपना हटा सकते हो, आपका फ्री हो गया हाथ। और उसके बाद आपको जो रिकॉर्डिंग करना, देखिए यहाँ पे नंबर चल रहा है रिकॉर्डिंग का। अब आप जितना रिकॉर्डिंग करना चाहते हो करके फिर आपको जब भेजना है तो आप सेंड का जो बटन है ये दबा सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं भेजना, कुछ गलती हो गई इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये कैंसिल का जो बटन है आप इसको भी दबा सकते हो और वो फिर ऑडियो सेंड नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको ये नए फीचर के बारे में मैंने पहले बताया है, और आप लोगों को जानना चाहते हो, मतलब आप दूसरे जिसको भी ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑडियो सेंड करने की, तो आप उनको शेयर करिए और लाइक करिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ये फीचर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी ही लॉन्च होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा।